अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे पहले जो कंप्यूटर साइंस के पेपर जो गेस्ट पेपर अपलोड किए गए वो केपी के बोर्ड थे, अभी वो पंजाब बोर्ड के थे। अभी केपी के बोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट द नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब process states, threads in process, multitasking and multi-threading, write a note on importance of system development life cycle, who is stakeholder, write a note on the phase of SDLC, what is the difference between constants and variables, write a note on types of constants, what is the difference between function and non-functional requirements, write difference between get and get function, write a program in C++ that displays to the age of a person, write a program in C++ to find even number from 0 to 100 using for loop, write a program in C++ to find leap year, write a note on logical relation and arithmetic operators, write a program to get 6 subject marks of a student and then calculate the total average percentage and then display it on screen. Write a C++ program to find out roots of quadratic equations, state difference between switched and nested if statement with the help of program, what are conditional statements, explain with the program examples, what is loop, define types of loops and their syntax, write a C++ program to read the address of a person and exit when person enters dot, what is array, also discuss terminologies used in an array, define initialization of one dimensional array with the help of program, who loops are used for writing and accessing at index of an array, write a C++ program to read the temperature of whole week in an array and then find the hottest day of a week, what is function, differentiate between user defined and built-in functions, write advantages of functions, write a note on components of functions, define static variables with the help of program, define formal and actual parameters with the help of program, define inline function with the help of program, to explain local and global function with the help of program, what is function overloading, explain the concept of function overloading with the help of diagram, write a program with the function that takes into parameters and them together and return their sum. Define the term pointer, describe the advantage of using pointers, what is the difference between reference and dereference operator, explain with the help of program what is the difference between classes and object, what is object, how objects are created to assess the members of class, write a program implementing a class with the name constant constructor and destructural function in its body। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, वैसे आप स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं, और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो मेरा बेटा डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर पे अपना नाम और बोर्ड लेके मुझे बता दीजिएगा और PDF ले लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर साइंस के केपी के 10th सेकेंड ईयर के। सो विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।